Hello everyone, welcome to JSSC PGT COMMERCE preparation classes. Today we'll discuss Race to Success MCQ series on cost accounting. There will be 25 questions. So let's begin. Question 1. The expenses that remain same regardless of the level of production is dash cost. Expense same होता है irrespective of लेवल ऑफ प्रोडक्शन, चाहे ऊपर या नीचे हो रहा है, एक्सपेंस सेम है, दैट इज टर्म्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन. वेरिएबल कॉस्ट होता है जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेरी करेगा, सो एक्सपेंस भी वेरी करेगा. एंड सेमी वेरिएबल इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. क्वेश्चन 2. द कॉस्ट इन विच देयर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, हम इसे बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट. एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. एग्जाम्पल कौन सा है? एडवर्टीजमेंट फिक्स्ड कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट. लेबर कमीशन रॉ मटेरियल है वेरिएबल कॉस्ट. स्टेप कॉस्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ही हम स्टेप कॉस्ट बोलते हैं क्योंकि ये एक स्टेप लैडर के जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फिक्स है, फिर वेरी करता है, फिर फिक्स रहता है, फिर वेरी करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड स्टेप कॉस्ट. क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल नहीं है. डेप्रिशिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस है फिक्स्ड कॉस्ट. वेजेस पेड टू लेबर, कमीशन, आयरन यूज फॉर कास्टिंग बाय अ फाउंड्री, ये हो गया सारा वेरिएबल कॉस्ट. 6 units of goods are sold at 180. If decreasing the unit by 5 units, they are sold at rupees 150. मार्जिनल कॉस्ट कितना है? मार्जिनल कॉस्ट 1 यूनिट का 1 यूनिट में चेंज ला रहे हैं, दैट इज 180 माइनस 150, 30 रुपीज़. 7. When sales exceeds break even point, then the firm earns profit. ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे ज़्यादा सेल्स हो रहा है सो प्रॉफिट है, इससे कम है तो लॉस है. और अगर ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स इक्वल है तो नो प्रॉफिट नो लॉस. क्वेश्चन 8. द पीवी रेशियो एंड एमओएस इज 20%, 50%. इफ टोटल सेल इज 5 लाख देन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी. टोटल सेल्स है 5 लाख, सो 5 लाख का एमओएस 50%, 5 लाख का 50%, 2,50,000. देन 2,50,000 का 20% विच इज़ 50,000. Question 8. When sales increases from 42,000 to 64,000, the profit increases by 11,000. PV ratio 64,000 minus 42,000 which is 22,000. So profit है 11,000. So 11,000 divided by 22,000 into 100 which is 50%. क्वेश्चन 10. टाइप ऑफ वेरिएंस डज नॉट इंक्लूड. कौन सा वेरिएंस नहीं है? मटेरियल ओवरहेड वेरिएंस है, लेबर ओवरहेड वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड है और वर्किंग ओवरहेड वेरिएंस विल बी द रॉन्ग आंसर. सो देयर आर 4 वेरिएंस: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. क्वेश्चन 11. अरेंज द स्टेप्स ऑफ बजटरी कंट्रोल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सबसे पहले क्या होता है इसमें से? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट्स टू बी अचीव्ड 2. इसके बाद एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, देन ड्राइंग अप अ प्लान, देन लेइंग आउट अ सिस्टम फॉर कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड लास्ट इज कलेक्टिव एक्शन, ऑप्शन सी. सो फर्स्ट हम लोग डिटरमाइन ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव, देन एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, ड्राइंग अप अ प्लान, लेइंग आउट अ सिस्टम फॉर कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड लास्ट इज टेकिंग कलेक्टिव एक्शन. क्वेश्चन 12. फॉर्मूला फॉर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेंट इनटू स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स. वेरिएबल ओवरहेड का 2 फॉर्मूला है, एक एफिशिएंसी वेरिएंस और एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस. अगर एफिशिएंसी हम लोग को निकालना है दैट इज स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर. एंड अगर एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है सो एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल ओवरहेड. क्वेश्चन 13. वेरिएबल कॉस्ट आर. संक कॉस्ट नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है,
आर कॉस्ट दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। संक कॉस्ट होता है जो डूब गया हमारा पैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कुछ स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो पूरा स्कीम ही डूब जाता है, इन्वेस्टमेंट डूब जाता है, दैट इज टर्म्ड एज संक कॉस्ट। Question 14. Using absorption costing, a unit of product includes which cost? The answer will be direct material, direct labor, variable overhead and fixed overhead. Question 15. The difference between variable cost per unit and selling price can be classified as. Selling price minus variable cost होता है contribution margin per unit. ये हम लोग देखे थे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल बी प्रॉफिट। क्वेश्चन 16. द वेरिएबल कॉस्ट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट टू कैलकुलेट। यूनिट इनकम नहीं होता है, यूनिट इनकम मार्जिनल इनकम सेम है, फिक्स्ड इनकम नहीं होता। द आंसर विल बी ऑपरेटिंग इनकम। Question 17. Which of the following statement is true regarding marginal costing? Fixed costs are treated as product cost. नहीं, fixed costs are termed as period costs. B. Marginal cost is independent. The elements of cost in marginal costing are divided into fixed and variable components. So option B and C, D. एजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, इसका दो कंपोनेंट्स होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड को बोलते हैं पीरियड कॉस्ट, वेरिएबल को बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है और वेरिएबल कॉस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन 18. द कॉस्टिंग मेथड वे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आर एडेड टू इन्वेंट्री, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्वेश्चन 19. While computing profit in marginal costing, fixed cost get added to contribution. No, the marginal cost deducted from total sales revenue. Option B. 20. Which of the following are the assumptions of marginal costing? Fixed cost is constant at all levels. Total variable cost varies according to the volume of output. All elements of cost can be divided into fixed and variable components. All are correct. Question 21. The term contribution refers to, contribution क्या होता है? Excess of selling price over variable cost per unit is termed as contribution. Question 22. Fixed cost is also referred to as, फिक्स्ड कॉस्ट को क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। क्वेश्चन 23. द प्रॉफिट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन 23. हाउ इज ब्रेक इवन पॉइंट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट? दोनों का सेम रिलेशनशिप होता है। If fixed cost decreases, BEP decreases. And the last question is, fixed cost does not include property tax, fixed cost है, insurance premium है, rent है, salary and wages will be variable cost. So that's all for today. Thank you. Keep learning.